Hello everyone, welcome back to my channel. Another week, another video, and in this video we are going to be doing something very different. Now I am going to try and motivate you, बाकी आपके ऊपर है. So basically the first thing to do is to get out of bed. I know सर्दियों में सुबह सुबह उठना बिस्तर से निकलना बहुत मुश्किल होता है, but just do it. Get out of bed and go to the bathroom. एक ठंडा पानी का आप ब्लॉब अपने मुंह में मारेंगे और आपकी आंखें बिल्कुल खुल जाएंगी. सो यूजुअली रेपिटिशन होती है डेज़ में, एंड आई नो मोटिवेशन आपकी ख़त्म हो जाती है कि हर रोज़ सेम ही रूटीन है. बट मे बी इन दिस वीडियो आई विल ट्राई एंड गिव यू लिटिल टिप्स एंड ट्रिक्स कि किस तरह से आप अपनी रेपिटिशन और रेपिटेटिव रूटीन को ख़त्म कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेप आई थिंक इज़ वेयरिंग अ डिफरेंट आउटफिट. ना आई नो कि हर रोज़ कोई एक ही कपड़ा नहीं पहन के जाता है, बट आई रियली लाइक टू गो एंड सेलेक्ट कि मैं कौन से कपड़े पहनूँ. एंड कभी कभार मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं वेस्टर्न कपड़े पहनूँ, कभी कभार मेरा दिल चाहता है कि ओ आई वांट टू वेयर थ्री पीस. नाउ अनदर मोटिवेशनल थिंग आई कैन टेल यू अबाउट इज़ क्लीनिंग आउट स्पेसेस, लाइक क्लीनिंग आउट द क्लॉजेट, क्लीनिंग आउट योर वैनिटी एरिया. दैट्स व्हाट आई हैव डन रिसेंटली, एंड ऑनेस्टली इतना अच्छा लगता है. सुबह उठ के एक मोटिवेशन मिलती है कि ओ एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी क्लीन, और मैं हर चीज़ जगह पे रखी होगी और बहुत आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हैं. सो दैट इज़ अनदर मोटिवेशनल टिप फॉर यू. नाउ व्हाट आई लाइक टू डू एवरी डे, स्विच अप माई मेकअप. कभी कोई फाउंडेशन यूज़ करूँगी, कभी कोई. सो इसके लिए आपको बहुत सारे फाउंडेशंस की ज़रूरत नहीं है. ऑब्वियसली आपके पास 2 फाउंडेशंस और आप उनको ऑल्टरनेट कर सकते हैं कि एक दिन एक तो दूसरे दिन दूसरा, एंड स्विच इट अप यू नो. फिर आप इस तरह से अपना फेवरेट फाइंड कर सकते हैं. यू कैन फाइंड समथिंग दैट यू लाइक. एक ऐसा रूटीन आप बना सकते हैं जिसको आप स्पाइस अप कर सकते हैं एवरी डे विद अ न्यू लिप कलर or with some background songs. I really like listening to songs when I'm getting ready, and sometimes जो मेरे दिन के tasks होते हैं I list them down in my head कि आज मुझे ये करना है, and I make a mental note like a checklist कि अच्छा आज अपनी लिस्ट पे मुझे ये चीज़ चेक ऑफ करनी है. एंड आई लाइक टू गिव these tasks to myself every day ताकि अपनी लाइफ को थोड़ा बहुत ऑन ट्रैक रखें, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर सकें. क्योंकि अगर आप काम करते हैं या आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो ये सब करना थोड़ा मुश्किल होता है. एंड दिस आउटफिट दैट आई एम वेयरिंग आई वांट टू टॉक अबाउट अ लिटिल बिट. ये है सेलिटेक्स क्लोथिंग से. ये उनकी स्विस वॉयल कलेक्शन का एक एम्ब्रॉयडर्ड आउटफिट है, एंड आई थिंक दिस कलर इज़ ब्यूटिफुल. विंटर में आई लाइक वेयरिंग लाइक स्टोन ब्राउन्स एंड डार्क कलर्स, क्योंकि आई थिंक कॉम्प्लीमेंट करते हैं सर्दियों के महीनों में वो कलर्स. एंड आई एब्सोल्युटली लव शिफॉन दुपट्टाज, और इस 3 पीस सूट के साथ एक शिफॉन दुपट्टा है जिसका कलर मुझे बेहद पसंद है. आई लव बेज, आई लव न्यूडी कलर्स, एंड द प्राइस ऑफ दिस आउटफिट इज़ 4475. एंड दीज आर द ट्राउजर्स लुक लाइक दिस. ट्राउजर्स पे नीचे एक पट्टी लगी हुई है विच ऑब्वियसली कम्स विद द ड्रेस, और जो दुपट्टा है दैट इज़ शिफॉन. एंड लुक एट द दुपट्टा, आई एब्सोल्युटली लव इट. वीकेंड्स पे आई थिंक आप जितने भी अपने वीकडेज़ के टास्क्स हैं वो कर सकते हैं. सो दैट इज़ व्हाट माय वीकेंड्स लुक लाइक. यूजुअली ये होता है कि फैमिली गैदरिंग्स हो जाती हैं तो उसके लिए कोई अच्छे से कपड़े पहन लें. 3 पीस ऑब्वियसली प्रेफरेबल. आपके अम्मा ज़्यादा आई थिंक वही प्रेफर करती होंगी कि बेटा आज 3 पीस पहनना. सो इंस्ट्रक्शन वही मिलती है ऊपर से, तो वही पहना चाहता है, अमल उसी पे किया जाता है. आई रियली डू लाइक वेयरिंग 3 पीस सूट्स बिकॉज आई थिंक एक ऑब्वियसली बहुत देसी लुक देते हैं, एंड ऑल्सो it just makes you look really sophisticated. Also I really like pairing outfits with different sort of jewelry does not have to be expensive. आप इंस्टाग्राम पेजेस पे चेक करें. मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम पेजेस अपनी इंस्टाग्राम पे मेंशन करती रहती हूँ. मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस में मेंशन करती रहती हूँ. पीचट्री पे बहुत अच्छी अफोर्डेबल ज्वेलरी होती है, आउटफिटर्स पे होती है. सो यू कैन रियली गो चीप विद योर ज्वेलरी एंड इट स्टिल लुक्स ब्यूटिफुल. जो ड्रेस है वो है सेलिटेक्स का, वो उनकी स्विस वॉयल कलेक्शन से है, और इसका कलर बहुत प्यारा है. लाइक इट्स अ रियली नाइस पीच कलर. दुपट्टा उससे भी प्यारे कलर का, इट्स लाइक अ पीचिश पिंकिश कलर, एंड इट्स लाइक वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स एवर. एम्ब्रॉयडरी जो है इट्स सो फाइन कि आपको यूजुअली कपड़ों के नीचे एम्ब्रॉयडरी होती है ना तो चुभती है, बट द क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक इज़ वेरी गुड.
नाउ वीकेंड्स पे यूजुअली प्लान्स ये होते हैं कि आप जाएं अपने रिश्तेदारों से मिलें. आई पर्सनली लाइक टू स्टे होम अ लॉट, क्योंकि वीकडेज इतने बिजी होते हैं तो वीकेंड्स पे यू लाइक ओ घर पे रहते हैं, कुछ नहीं करते, नेटफ्लिक्स देखते हैं या कोई मूवी देख लेते हैं. बट आई थिंक एक अच्छा डिफरेंट हो जाता है इफ़ यू एक्चुअली गो आउट एंड मीट पीपल. ऑल्सो आई रियली डोंट लाइक वेयरिंग हील्स, तो मैं यूजुअली फ्लैट्स पहनती हूँ और ये अम्मा को मेरी बात अच्छी नहीं लगती. शी इज़ लाइक वेयर हील्स. Feeling this outfit. I love the pink dupatta and the gown, the embroidery. Perfect. I personally believe your outlook towards life is what keeps you happy. It is what makes you rich. अगर आपके पास बहुत दौलत है, you can still be like sad, but इट्स द स्मॉल थिंग्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप एक कोई पुराना बैग लें और उसको अपना बैग इस्तेमाल करना शुरू कर दें. कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपने बहुत टाइम से यूज़ नहीं की है, उसको शिफ्ट करें, नई जगह डालें. फॉर एग्जाम्पल गेटिंग अ न्यू बैग, और इफ़ यू हैव एन अदर बैग दैट्स केप्ट इन योर क्लोजेट, उसमें आप चीज़ें डाल लें और उसको आप अपने साथ डेली रूटीन में यूज़ करें. तो एक स्विच अप होता है, यू नो, दीज लिटिल थिंग्स जो कि बहुत ही छोटी हैं बट दे रियली मोटिवेट यू. ऑल्सो सेलेक्टिंग अ डिफरेंट, लाइक गोइंग एंड सेलेक्टिंग आउटफिट्स during the day, pairing them together. I personally really like it, obviously because I like fashion. मगर अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकती, then you're wrong. I think the first step towards living a richer life is to think that you can do this. अपने means के अंदर रह के you can achieve a lot of things. Like you don't have to have expensive things. You can have cheaper things, but you can have them and you can still feel good. And it's not about having the material things. I think it's more about the outlook and the approach you have towards the things is what counts more. So the third outfit that we're going to talk about is from the Swiss collection, the linen collection of Celitex clothing. और linen collection में आपको linen दुपट्टा भी मिलता है जो कि slightly भारी है because I am like small, but I think it looks very classy. The trousers are also really cool. अगर like this is a whole idea कि अगर आप ये collection actually लेते हैं तो किस तरह से आप उसको सिलवा सकते हैं. कपड़ा बहुत सॉफ्ट है और अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे सर्दियाँ पड़ती हैं, then I think linen is a great option to have. Also I love the color of this 3-piece dress. मेरे पास बिल्कुल ऐसा कलर नहीं है. Now also I think something that can motivate you is listening to new music. Like SoundCloud पे जाएँ, मुख्तलिफ playlist पे आप नया music search करें, तो आपको you know when you find new music that also makes it a little bit more exciting. So then again I would like to mention that life is all about positivity. Live it happily. अगर आप sad होके जिएंगे तो फिर sad ही रहेंगे. अगर आप अपनी outlook थोड़ी positive रखेंगे then it's going to obviously be good for you. So that was all. I hope you enjoyed this video. If you did, make sure to give it a big thumbs up, and now I will soon see you in my next week's video. Subscribe till then, and bye.